Good evening, everyone. Welcome to our first introductory masterclass on Readathon Advanced. Those who have joined earlier might know that we take an introductory session every time we start a challenge. This is for you to get acquainted with the challenge because it's just 4 hours away now. So be ready, be acquainted, and get yourself prepared for tomorrow and for the next 21 days because as you feel it's not just easy, you have to be consistent and you have to be aware that you are in a competition, and hence the preparation is important. And that's just the reason we told you to mention 3 books in the form itself. So when you actually prepare, when you actually know what you are going to read in these 21 days, you are more prepared for that. Hence, 3 books. And the consideration for this challenge will be that you read at least 3 books in these 21 days, the 1 book per week. So, yes, without further ado, I'll start. Okay, so I would like to share why this challenge. Earlier, the Bibliophile family aimed to have such challenge that is inclusive for everyone and for the readers, those who are beginners. But as we grew and as the members also grew along with us, so before TBF, before with us, I think we were not reading so much. We were reading. I'm not telling about that, but yes, our reading has increased. And when our level is increased of reading, our competition level should also increase. This is the first thing. Then uh, there have been already there are readers who are actually reading more than us, and they are top of their game. So we might also know the techniques and reading skills how they are doing it. So right now we know a lot of good readers like Richa ji is there, Zainab is there, Jyotsna ji, Rumit ji. All these are toppers of the readathon, and we know their techniques. We know how they inspire us and how they manage time and take out time for reading. Now, when the challenge is also big, they also have to up their game and we'll get to know more techniques and we'll get to know how we are able to take the most of this. My aim is to make you read more in these 21 days and not stop scrolling or stop digital devices, but yes, divert your brain from digital devices and all the other distractions towards books. And I hope you will gain from this. Another thing is, I would like to ask you all why reading books? Why do you read books? What is one reason that you vouch for and you read? Anyone in the comments, please share. Uh, Hello. Hi, Palak. Hello, Uh, Kavita ji. why we read is a very difficult question when you put it up because for me, like I've been reading since I was a toddler, so it's a very difficult question actually. Uh, but then it if I look at it from the lens of benefit, then I would say that it keeps my imagination, my power of visualization, uh, on a very high level. You know, it's like if, there are times when if I don't read, no, then I just feel that my creativity is slipping away. I just feel blank. So when I read stories, when I read books, it keeps me the battery level of my creativity, my imagination high. So I would say that that is what keeps me going as far as reading is concerned. Thank you so much, Kavita. It's beautiful. Yes, reading book helps me slow down, gives me a very strong anchoring. Beautiful answer. And I want to embrace this as an analog activity. Reduces my stress, keeps me too productive. Beautiful.
Beautiful answers, Kavita ji, Richa ji, and Zainab. There are multiple reasons to why we read. Absolutely, Sanjay ji. Acquiring different perspectives. We read, when we read, we live multiple lives and we get to know multiple experiences through just reading something. Definitely. So, reading is not just for completing books, not just for having a tally of reading 100 books in a year or something like that. For me, when everyone asks me why, how are you able to read such so many books, and I'm not here for a competition and I'm not here for a number. And when I tell anyone, they pose me these questions. So for me, reading is not just stress reducer. It is actually it is the only source through which I reduce my stress through meditation, reading, and journaling. Reading is entertainment as well. I don't prefer other means of entertainment but reading because I have control over what I read. Otherwise, the other entertainments they tell you what to do. Netflix is just bombarding the images over you or Instagram. So this is one of the reasons, and that's why maybe I'm stuck to so much reading. And in that, my speed increased. And when my speed increased, my number of books as well increased. And sometimes, when you're an avid reader, a lot of you will be able to relate with me. You're able to guess what the author is writing. You're able to guess the three lines. कि अच्छा ये तो ये बोल रही है, and you skip through it. So there are so many things that reading actually does to you. Yeah. So reading gives me a break from reality. Beautiful. Reading is like a stress buster. Very true. And imaginations and perspectives. So, yes, for this challenge, remember why you are reading. Why I'm telling you this? Because the first week you all will be very uh, enthusiastic and motivated about reading, and then something comes up, and a person kid's exam is there. You're not doing well. A lot of responsibilities are there in our lives, and that are so important that they cannot be avoided, and amidst those responsibilities, you will give time to reading. You will give time to this challenge. So just remember the reason of your reading every time you are in this challenge, and also increase the reasons of your reading. You will be able to actually increase the reasons कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ. And also speak in Hindi a little bit so as to give full comprehension to everyone. तो हम पढ़ने के रीजंस, हम पढ़ने के कारण ढूंढ रहे हैं, और पढ़ने के कारण सिर्फ ये नहीं होके कि हम हमें स्ट्रेस बस्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये तो है ही, मेरा भी होता है, बट और भी कारण है. हमारा दिमाग शांत रहता है, ये हमें नहीं पता पड़ेगा, बट हम जब ज़्यादा पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारा दिमाग इधर उधर नहीं घूम रहा है. हमें एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना चाहिए. तो अपने रीजंस खोजें और अपने रीजंस को याद रखें, ताकि वो आपको इस चैलेंज में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे. जब आप सेकंड वीक में जाएंगे और आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं बचेगा, बहाने ज़्यादा होंगे, तो ये रीजन आपको मदद करेगा कि आप ये इस चैलेंज में आगे बढ़ते जाएं. क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक मुझे दिख रहा है इस चैलेंज में, सब धुरंधरों ने ज्वाइन किया है. तो एवरीवन विल रीड विथ यू, एंड यू माइट फील कि अरे मैं तो पीछे रह गया है, मैं तो पीछे रह गई. नो, you have your own reasons to read, you have your own reasons for this challenge. तो आप आपके लिए पढ़िएगा, बाकियों के लिए नहीं. और उसमें आप बिल्कुल लास्ट टाइम मुझे लगता है लास्ट टू लास्ट रीडर में आई थिंक रिचा दी वाज लाइक कि मैं आई एम रीडिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे कोई कंपटीशन नहीं है. शी हैज अ किड, शी हैज अ फैमिली टू टेक आफ्टर, शी इज अ म्यूजिशियन, पर बट शी वन. तो बोली अरे मैं कैसे जीत गई, बिकॉज यू डिड नॉट एक्चुअली थॉट टू विन, राइट. पर अरे तुमने तो मुझे प्राइज भेज दिया. सो दैट इज द मोटिव कि आप आपके लिए पढ़िए, आपके रीजंस निकाल के पढ़िए. सो यस, अब मैं थोड़े से गेट टू द रूल्स. एंड apologies if you're not able to hear me clearly, I'm not very well, so my voice is not very clear, but if any issues in clarity, do let me know. I will repeat it for you. So this is the component, these are the components. First is book reading. I have We have mentioned in the form itself
that you have to read minimum of 3 books in this whole challenge. There should be a maximum number of book of course, but minimum 3. अगर आप 3 books finish नहीं कर पाते हैं at the end of the at the start of the third week, or if you are able to get कि आपका तीसरा book खत्म हो जाएगा, will remove you from the challenge. Like on 15th or 16th day, from tomorrow the first day will begin. So on 15th or 16th day, if you are able to see कि your book is not finished, third book भी नहीं हुई है, तो you will automatically be removed from the challenge. Will tell you कि आप your journey ends here like that. It is very strict, so please don't mind. Then book summary. So book summary is about any book you are reading. You have to give the summary in a word format. So there will be a form that will be shared with all of you, and in that form you have to submit every day कि आपको वो समरी उस सेक्शन की आपको लिख लिख के देनी है. फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग द बुक द रेस्टोरेंट ऑफ लॉस्ट मेमोरीज में एक एक स्टोरी है, तो मैंने एक स्टोरी पढ़ दी, तो मैं उसकी छोटी सी समरी आपको आई टाइप इट. इट कुड बी 10 pages, 10 pages summary, it would be 10 word summary, but I should be able to understand what you have read. आप ऐसा कुछ भी चैट जीपीटी वर्दी समरी न लिखें, so that will be very blasphemous. We are readers, and we are fighting for AI generated content every day, so I hope you will not be using fully AI. पूरा कॉपी पेस्ट ना करें, टेक हेल्प फ्रॉम AI. देन बुक समरी आपको हर बुक की लिखनी है. देन देर विल बी शॉर्ट बुक रिव्यूज. व्हाट आर शॉर्ट बुक रिव्यूज? सो every day at 8:30 p.m. this time you have to log in. Attendance will be tracked. I'll tell you the scoring things. So every day you have to join at 8:30 p.m. 8:30 p.m. to 8:50 we read. 8:50 to 9:15 we discuss. तो जब आपकी बुक कंप्लीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रिया जी विथ मी, मुझे देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रिया जी ने ये बुक कंप्लीट कर ली 4 दिन में, तो फोर्थ डे प्रिया जी विल टेल अस इन द ग्रुप कि आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक एंड आई विल बी गिविंग द समरी ऑफ दिस बुक. तो आप उसकी 5 मिनट या 10 मिनट का बुक रिव्यू दे सकते हैं रीडिंग सेशन में. सो फॉर एग्जाम्पल रिचा जी, रिया जी, बोथ ऑफ देम हैव कंप्लीटेड द बुक, तो दे कैन, बोथ ऑफ देम कैन गिव अ बुक रिव्यू. तो एवरी डे हमारे पास कोई ना कोई जरूर होगा जो एक शॉर्ट बुक रिव्यू देगा. That book review will be counted. Why I am doing this? Sometimes it's not possible to give do a full document wala summary, and you are far behind in that. So you'll be able to give that. 10 मिनट की summary या 5 मिनट का book review you can give easily while talking to us. So we will able to know that yes you have completed the book. And through आकाश जी आप हिंदी में भी दे सकते हैं. तो थ्रू दैट वी विल बी एबल टू नो दैट यू हैव फिनिश द बुक. एंड हम सबको बहुत सारी बुक्स का बुक रिव्यू छोटा छोटा मिलता रहेगा. दैट्स व्हाई दिस, एंड इट्स नॉट इट्स डिफिकल्ट चैलेंज, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. आप हम वैसे हम टीबीएस में हैं तो हम एक हफ्ते में एक किताब तो हम वैसे पढ़ ही लेते हैं मोस्ट ऑफ अस, बट इफ नॉट, लेट्स सी. तो छोटे बुक रिव्यूज रहेंगे और एक फाइनल बुक रिव्यू. वी ऑल नो अबाउट दैट. वन बुक रिव्यू इज मैंडेटरी, जो हम सैटरडे को करते हैं. जैसे कल शेर सर का बुक रिव्यू है शाम को, तो दैट विल बी बुक्ड फॉर ऑल ऑफ यू. आप हम आपको कैलेंडर की डेट्स दे देंगे, आप उसमें से कोई भी डेट चूज कर लीजिएगा. दैट बुक रिव्यू कुड बी 30 minutes लॉन्ग और इट कुड बी 1 hour लॉन्ग, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. और उसकी प्रेजेंटेशन बेसिस पे भी आप बुक रिव्यू दे सकते हैं, और यू कैन गिव इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट एज वेल. So there are 2 book reviews this time. I hope you are able to gather what I'm trying to say. मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही है. Yes. Then हर बुक जब आप कंप्लीट करेंगे, थैंक यू सो मच एवरीवन. हर बुक, every time you finish a book, obviously you will put it in the group that I have finished the book. Then there will be a book quiz given to you by me, 1 question or 2 question by me or Shungeri, and you have to answer it in the
आई गिव यू इन अ फॉर्म, और वो फॉर्म आपको भरना रहेगा। तो उसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे उस बुक के बारे में। फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट ऑफ लॉस्ट रेसिपीज में मैंने पूछ लिया कि ये वाली स्टोरी में क्या हुआ था, तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि क्या हुआ था, एंड देन योर बुक वुड बी फिनिश्ड। Why this such kind of marking and questions? Because there are so many cheatings and so much of backbiting going on. That's why I want the authentic reader ही जीते readathon. Then sessions and attendance. This is very important. So the new members, please take note. On Monday to Friday, we have 8:30 p.m. reading sessions every day. 8:30 to 8:50 we read silently, switching on of camera, कुछ भी करके आप पढ़ते रहो। 8:50 से 9:15 या 9:30 we will discuss the book. This is Monday to Friday. Now next is 7 p.m. book review sessions जो सैटरडे को होते हैं, एंड 7 a.m. community reading sessions जो संडे को होता है। These two sessions are very important. आपको वो उसकी अटेंडेंस मिलेगी। जस्ट एनी क्वेश्चंस? नो पलक। वैसे कल शेर सिंह सर किस बुक पे रिव्यू दे रहे हैं? Sitting kills and moving heals. अच्छा। I'll post the poster. क्या? हम्म। तो संडे का जो सेशन है वो जैनब सुबह 7 बजे है, कम्युनिटी रीडिंग, और 7 p.m. पे बुक रिव्यू सेशंस होते हैं जो जैसे कल है, तो कल से आपको अटेंड करना शुरू करना है बुक रिव्यू सेशंस। Yes. So our aim is that you get a thorough reading practice, you get your mastering books because you're writing summaries, and you will enhance your summary writing skills and eventually your writing skills. Most of us are writers here. And then yes, completing your TBR. At least आप ये आधे साल की TBR तो निपटा ही दीजिए रीडाथॉन में। So rules. Read minimum of 3 books. Quiz I'll give. Make a book summary. AI बिल्कुल प्लेजरिज्म चेक होगा, तो प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें। सबमिशंस मिडनाइट से पहले कीजिए। आपका जो रीडाथॉन है वो 12 बजे सुबह चालू हो जाएगा, 12 a.m. मिडनाइट। आज से 9 बज रहे हैं, 3 घंटे में रीडाथॉन चालू हो जाएगा। वी विल गिव यू द लिंक जिस पे क्लिक करके आपको लॉग इन करके रखना है। आप फिर कभी भी पढ़िए, रात के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप उस दिन के 12 बजे के पहले हमें समरी और आपका अपडेशन लिख के दे दीजिए, और ऑलवेज लॉग इन टू गूगल मीट। यस। पलक, रीडाथॉन के बारे में बताना। जैसे आज रात को 12 बजे शुरू होगा, तो कल दोपहर 12 बजे तक। कल दोपहर 12 बजे तक कैसे मैम? कल रात 12 बजे तक। अच्छा, 24 घंटे में। और रीडाथॉन में क्या चैलेंज देते हैं? यू प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। मैं आपको वीसी वॉइस नोट भेजती हूँ। यू हैव जॉइंड एक्चुअली लेट, मैं पिछले 20 मिनट से हाँ। यही बता रही हूँ कि क्या चल रहा है रीडाथॉन में। ओ सो सॉरी, आप मुझे भेज देना, मैं सुन लूंगी। हाँ। ऑल राइट। सो योर डेली अटेंडेंस से आपको नंबर मिलेंगे, आपकी रीडिंग सेशंस पे और वीकेंड सेशंस के अटेंडेंस पे, आपकी समरी पे, आपके 10 मिनट्स शॉर्ट रिव्यू पे, आपके मेन बुक रिव्यू सेशन जो 7 बजे होते हैं उस पे, और आपकी क्विज पे। ये पॉइंट्स है जिस पे आप स्कोर होंगे। प्लीज डोंट बी स्कैर्ड। दिस इज फॉर अस टू मेक द रीडाथॉन ऑथेंटिक। यू रीड एंड यू राइट द समरी, बस आपको यही करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। बट हाँ, गूगल मीट पे जरूर लॉग इन कीजिए, उसी से हमें आपकी अटेंडेंस मिलेगी। एनीवन इन द ग्रुप वुड लाइक टू शेयर, सुदीप जी, कि रीडाथॉन में क्या चल रहा है? एनीवन?
I'll take some rest to my throat. कोई तो बोलो. All पलक the OGs. क्वेश्चन समझ में Yes, नहीं Zainab. आया एक्चुअली। Yes, Zainab. क्वेश्चन समझ में नहीं आया। I'm telling, please give a summary to Sukhdeep ji about the readathon. ओके, तो सुखदीप जी ऐसा है कि 24 आवर्स के अंदर कंपटीशन, लाइक इट्स द कंपटीशन विथ योरसेल्फ आल्सो एंड विथ अदर्स आल्सो। आप खुद के साथ और दूसरों के साथ compete कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि ये वाला जो रीडाथॉन है वो एडवांस रीडाथॉन है। तो इसमें फ़र्क ये किया गया है कि लास्ट के जितने भी सारे रीडाथॉन आई गेस 4-5 हुए हैं पलक, आई गेस। हाँ, तो जितने भी रीडाथॉन हुए हैं उसमें मैंने तो 2 बार पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें क्या है कि लोग कॉम्पीट करते हैं कि आज मैंने कितना पढ़ा, और एट द एंड हम एक विनर डिक्लेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना पढ़ा है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस बार थोड़ा लेवल अप है। ये इसीलिए किया गया है कि कोई चीटिंग ना हो और दूसरे पार्टिसिपेंट को ऐसा ना लगे कि सामने वाले ने सिर्फ पत्ते, नंबर्स ऑफ पेजेस लिख दिए हैं और उसने प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है। इसीलिए रिव्यू, और इससे मतलब ये भी है कि सामने दूसरे पार्टिसिपेंट को ये भी पता चलेगा कि ये किताब मेरे लिए है या नहीं है। तो ये एडवांस रीडाथॉन है, इसमें ये सारे रूल्स हैं जो अभी बताए गए 5 मिनट में। ठीक है, थैंक यू जेनम। Thank you so much, Zainab. हाँ, बट मुझे ये लगता है कि मतलब बुक रीडिंग में तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए लोगों को, है ना? रिव्यूज़ जीतने के लिए थोड़ी होता है। बुक रीडिंग तो खुद Yes, की yes. अपलिफ्टमेंट के लिए होती है, और अगर हम खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, तो हम दुनिया के साथ क्या ऑनेस्ट होंगे? Beautiful. Yes, thank you so much, Sudeep ji. Great words. So इसमें 21 days है. 25th मतलब कल से ये शुरू हो रहा है. I have given the form. If those who have not registered, you can register. 25th to 18th of May तक चलेगा. 15th of May तक चलेगा. And yes, buckle up. I hope you'll enjoy this reading together. And yes, with that, I will come to the end of the session. You all can be here and discuss the books. Over to you, Sheikh sir. अरे पलक, 100-100 रुपए फीस भी रखो। 300 रुपये फीस है. हाँ, ठीक है, सही है। हाय शेर सिंह जी, हाय संजय, कैसे हो?